Hello guys, welcome back to my YouTube channel. So today we are going to talk about turning point of life, and of course we are going to light up some uplifting thoughts with the help of this statement. So now let's move towards our main content. तो पहले तो ये समझ लेते हैं कि ये टर्निंग पॉइंट्स है क्या। तो भाई ये वो टर्न्स है जहाँ आपकी लाइफ सवर भी सकती है या फिर बिगड़ भी सकती है। So these turning points are not always visible, right? And because of that, we never think much upon a particular choice whenever we choose something. And trust me guys, depending on a certain situation, if you are trying to choose something out of it, then it can be your turning point of your life. We all are in the journey of life, and we all know throughout the journey of a life we face many turning points which give us a turn towards a good and sometimes bad chapter too. But then the question arrives in our mind, can't we just create those turning point on our own, which will only lead us towards a bright future instead of going through ups and downs? And guess what guys? Yes, we can create our own turning points by analyzing our interest, and that's simple. Just we have to interpret the consequences of implementation. Now it's like planning your turning points with future security too. मोस्ट ऑफ द पीपल ऑलवेज थिंक लाइक यार मेरा टर्निंग पॉइंट कब आएगा, मैं कब बड़ा आदमी बनूंगा, लेकिन ये नहीं समझ पाते कि आखिर कब तक एक अच्छे टर्निंग पॉइंट के लिए रुकोगे। बिकॉज टर्निंग पॉइंट आर नॉट बेस्ड अपॉन योर लक, इट इज़ ऑलवेज बेस्ड अपॉन वॉट यू आर डूइंग राइट नाउ। तो यार जागो, उठो और अपने सपनों के लिए भागो। इसी से ही तुम खुद के टर्निंग पॉइंट्स खुद बना पाओगे, और जब तुम आगे जाके सक्सेसफुल हो जाओगे ना, तब इसी हार्डवर्क के डिसीजन को तुम गर्व से अपना टर्निंग पॉइंट बता पाओगे। And as I said, whatever you decide to do with your life now, it will pin as a turning board on your tracks of your life. हमारी ज़िंदगी में इस टर्निंग पॉइंट की कितनी बड़ी वैल्यू है ये हम समझ ही नहीं पाते हैं, और बस ज़िंदगी में कुछ अपने आप ही नया होगा इसी उम्मीद में जीते रहते हैं। हाँ, माना कि उम्मीद हमें ज़िंदगी में एक आगे बढ़ने की राह दिखाती है, लेकिन ऐसी उम्मीद का क्या फ़ायदा जो एक ही जगह पे हमें रोके रखे। Now guys, you have to decide whether to wait for your turning point or to create it now. So guys, if you like the video, then do like it, share it, और हाँ, सब्सक्राइब करने के साथ नोटिफिकेशन बेल दबाना मत भूलना। And guys, if you want to stay connected and motivated with me, you can follow me on my Instagram. So till then, stay hustleheaded and struggle on.